हे किड्स व्हाट्स अप। सो हम लोगों के पास आज का जो टॉपिक है वो डिस्ट्रक्टेड असाइनमेंट है। डिस्ट्रक्टेड असाइनमेंट्स क्या होता है? बेसिकली टॉपिक एडवांस्ड ऑब्जेक्ट्स के अंदर आता है। सो लोग बेसिकली आई डोंट हैव अ बोर्ड एंड cause I don't have a board basically, so whatever I could get, I had a copy inside my bag and I had to borrow a pen. So this is what it is, right? So didn't want it to stop this journey of learning the stuffs and teaching stuffs. So basically here's a video. तो कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोगों ने वेम्पायर नाम का एक वेरिएबल असाइन किया है, एक वेरिएबल क्रिएट किया है बेसिकली, और उसको असाइन किया है एक ऑब्जेक्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप नोटिस करो, ये वाला हो गया पहला, क्या ये वाला हो गया पहला प्रॉपर्टी, ये वाला दूसरा प्रॉपर्टी, और ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरा प्रॉपर्टी। तो ध्यान से देखो, जो तीसरा प्रॉपर्टी है ये खुद में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो दो सब प्रॉपर्टीज़ को कंटेन करता है, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ मिलेगा, एक की एक वैल्यू, की एक वैल्यू, एक की एक पूरा का पूरा वैल्यू। इसमें वैल्यू, तीसरा जो ऑब्जेक्ट है उसका वैल्यू है, और भी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, सॉरी और भी प्रॉपर्टीज़। तो वही है, नेम नाम का की है, ड्रैकुला नाम का टेक्स्ट है जो उसको असाइन किया गया है। नेम नाम के इस की को ड्रैकुला नाम का वैल्यू दिया गया है। रेसिडेंस को ट्रांसाइलावानिया नाम का टेक्स्ट असाइन किया गया। प्रेफरेंसेस में आप ध्यान से देखो, तो जैसे मैंने बताया, प्रेफरेंसेस एक थर्ड प्रॉपर्टी था जो कंटेन करता है एक ऑब्जेक्ट। दिस इज नेस्टेड ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ थिंग, राइट। नेस्टेड ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के अंदर, वेम्पायर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेफरेंस नाम का एक और ऑब्जेक्ट है जो कंटेन करता है दो प्रॉपर्टी। इवन दो प्रेफरेंस एक प्रॉपर्टी भी है, बट एक डिफरेंट स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है, क्योंकि इफ इस प्रॉपर्टी का वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है, व्हाटएवर। सो डे नाम का की है और स्टे इनसाइड इज आवर वैल्यू। नाइट नाम का की है एंड satisfy appetite is the text of night. होपफुली क्लियर, ठीक है। यहाँ तक पूरा का पूरा जो हम लोग का ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन है वो ख़त्म होता है, ठीक है। फिर कॉन्स्ट नाम का एक और वेरिएबल हम लोग, ये यहीं पे आता है, ये डिस्ट्रक्टेड असाइनमेंट। डिस्ट्रक्टेड असाइनमेंट का जो स्टोरी होता है वो यहीं पे आता है। देखो, कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोगों ने रेसिडेंस इक्वल टू वेम्पायर, जो हम लोग का ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर जो एक की था रेसिडेंस, ऐसे करके एक लाइन में लिखा। सबसे पहले क्या लिखा, कॉन्स्ट कीवर्ड लिखा, उसके बाद रेसिडेंस। क्या है, रेसिडेंस नाम का हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया और उसको असाइन किया वेम्पायर डॉट रेसिडेंस, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग रेसिडेंस करने से जो ट्रांसाइलावानिया जो ये वैल्यू था, किसको असाइन था, रेसिडेंस नाम के इस की को, वो प्रिंट आउट हो जाता है जब सिंपली आप रेसिडेंस इस वेरिएबल को आप क्या करते हो, बुलाने की कोशिश करते हो। जब इस वेरिएबल को बुलाते हो तो ये ट्रांसाइलावानिया वैल्यू देता है। क्यों दे पाता है? क्योंकि रेसिडेंस जो ये वेरिएबल है वो क्या कंटेन करता है, ऑब्जेक्ट डॉट रेसिडेंस, ऑब्जेक्ट डॉट रेसिडेंस। इट्स आवर वेम्पायर इज आवर ऑब्जेक्ट, रेसिडेंस इज और की, पॉइंट आउट कर रहा होता है किसकी तरफ, ट्रांसाइलावानिया। तो बेसिकली रेसिडेंस के अंदर क्या घुसा हुआ है, ट्रांसाइलावानिया। तो इसलिए जब कंसोल डॉट रेसिडेंस करते हैं तो ये पॉइंट आउट कर रहा होता है किसकी तरफ, रेसिडेंस नाम के की तरफ, और रेसिडेंस नाम का की कंटेन करता है ट्रांसाइलावानिया। इसलिए स्क्रीन पे ये ट्रांसाइलावानिया आउटपुट आ जाता है। अब इसी को शॉर्ट हैंड तरीके से लिखने का एक और वे होता है, वो देख लेते हैं, राइट। सो उसके शॉर्ट हैंड तरीके से लिखने का तरीका है कि कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल सिंपली सेम टू सेम इसी तरह। लेकिन इस बार जो हम लोगों को ये चाहिए, वेरिएबल चाहिए। देखिए यहाँ पे नोटिस किया जाए तो रेसिडेंस जो ये वेरिएबल था वो की का भी नाम रेसिडेंस ही था। इसीलिए हम लोग इस चीज़ को ईजी करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, रेसिडेंस जो हम लोग का की है और वेरिएबल है उसको लिख देते, उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पुट कर देते हैं, उसको असाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं असाइन, वेम्पायर नाम का ये ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली क्या करेगा, रेसिडेंस नाम का ये की को उसके अंदर ढूंढेगा और उसको क्या करेगा, वो बेसिकली उसको क्या करेगा, वो उसको बाहर निकाल देगा, उसको क्या कर देगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। एक्सट्रैक्ट करके रेसिडेंस नाम का की को बाहर लेके आ जाएगा, उसके अंदर जो भी है की वैल्यू सारा का सारा वो बाहर आ जाएगा। इसलिए अब सिंस वो बाहर आ चुका है तो कंसोल डॉट लॉग रेसिडेंस करते हैं सिंपली, जिस तरह एक वेरिएबल को बुलाते थे उसी तरह इस वेरिएबल को भी बुलाना है तो ट्रांसाइलावानिया आ जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2। देखो, कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग अपना वेरिएबल का नाम लिखते हैं। वेरिएबल का हो या की का नाम हो, डे, क्या डे नाम का कहीं पे की दिख रहा है, कहाँ पे, प्रेफरेंस नाम के इस पेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है। उसको असाइन कर रहे हैं क्या, वेम्पायर क्या है हम लोग का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डॉट प्रेफरेंस करने से क्या होता है, डॉट प्रेफरेंस करने से ढूंढता है कि प्रेफरेंस कहाँ पे है, तो प्रेफरेंस यहाँ पे है। और प्रेफरेंस के अंदर क्या है, दो चीज़ है, डे और नाइट, ठीक है। तो अब क्या पिक करेगा, सिंस यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्स्ट के बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डे पुट किया है, यूजिंग द डिस्ट्रक्टेड असाइनमेंट टेक्निक, ये जो डे नाम का चीज़ है वो कहाँ पे सेव हो जाएगा,
डे नाम का चीज़ इस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। बेसिकली ये जो डे वाला पार्ट है ये बाहर निकल चुका है। जब कंसोल डॉट लॉग सिंपली डे करोगे तो हम लोग को आउटपुट क्या देगा, स्टे इनसाइड, जो हम लोग का टेक्स्ट था इनसाइड डे नाम का की दैट वाज इनसाइड द पेरेंट ऑब्जेक्ट प्रेफरेंस। ठीक है, तो आपको नेविगेट करना ही पड़ेगा, यू नो, जब असाइन कर रहे हो तो वेम्पायर डॉट प्रेफरेंस करना ही पड़ेगा, नेविगेशन जो डॉट नोटेशन है उसका यूज़ करना ही पड़ेगा। होपफुली काइंड ऑफ मेक सेंस, बोर्ड के अंदर समझ में आएगा लैपटॉप के साथ। Distracted assignments. We often want to extract key value pairs from an object and save them as variable. Take an example. Take a look at the example below. Now we have discussed this example on the copy, but I'm pretty sure it was not visible, must not be clear. So let's discuss it right now. Even let's copy this and put it on our code editor. So here's the const keyword and created a variable vampire and assigned it an object. The key is name. Sometimes key is residence, sometimes key is preference. And accordingly, there is value Dracula, Transylvania, and also an object. So basically, preference is an object inside vampire object. Preference becomes a sub object. This sub object contains two properties, namely day and night. Day is a key and night is also a key. Day contains a string, night also contains a string. Now, what was the whole point about distracted assignment? The point was to extract a certain key value pair, to extract a property and save it as a variable. So for that, we need to do a code. We need to type a certain code that is simply like in this case, we'll just use the const keyword, and let's say we want to put in residence, this key, and its value as a variable. So we'll simply put this is the method one. We have method one, method two. This is the method number. The residence, we assign it simply our object. Now objects what? The object's residence named key. This you need to use dot notation, or simply you can use this, or in quotes you can put it. There will be no problem, right? It will run, or you can simply cut it out, or simply use the dot notation. After the object's name, you can put the dot notation and the key's name which you want to extract the value of. This is method one. However, you can take the advantage of distracted technique called distracted assignment, take it to save ourselves some keystrokes, basically to make our typing work easy. In distracted assignment, we create a variable with the name objects key that is wrapped around the curly braces. Simply the key has to be wrapped around the curly bracket after you have declared the const keyword. All right, then you need to use curly brackets. And inside this curly bracket, you need to put in the object's name. Let's say we want to put a name there, so simply put name there. All right, and we want to assign it what is this name? Where in this name is contained? Which place is that? Inside the object vampire. Simply we need to assign it vampire. Company vampire. All right, let's run it. So it will be saved, right? It will be saved. If you want to check it that it's saved or not, simply console.log and simply name. Give you an output Dracula. This is Dracula. See, or simply we want to know that is your code working or not. Simply put in residence, residence, and you will get an output that is Transylvania, which was extracted out of our object vampire. Right. Look back at the vampire's object properties in the first code example. This example. Then in the example below, declare a new variable residence that extracts. Okay. Yeah. We can use distracted assignment on nested. Or now, what about nested? Alright, these are very easy and we can understand this. But what about, can we, can we do something with this preference as a type object? Can we do something? Yeah, we can surely do something. We can do everything we can do to this, non-nested property. So this preference is an object that is a nested object example, that is vampire object contains a one more object inside, that is called nested object, right? So we can also play with nested objects. There's no problem in that. Simply we type the const keyword and then we type in the curly braces, and inside, if you want to access the night, if you want to extract the night key's value to a variable night, so we'll simply do that and we'll assign it, and we will assign it our object's name. As simple as that, vampire. But if you look closely, we need to assign what? Our object's name, not the key's name. Alright, the object's name. Though if you look, there are two objects. Right? One is the parent object and there is the child object. Right? Preference is the child object. We have written the parent object, but we need to also show which object. That is preference. We need to type this thing. We need to show the object's location, right? So vampire is also an object, preference is also. Do it like this and simply save it. Alright, if you want to check it worked or not, simply console it out. Console, you see,
By assigning it to a variable, our work becomes so damn easy. See, satisfying appetite at night. That got printed out. Satisfying appetite, this very value got printed out. You can assign it that way. So let's clear it out and let's do some instructions. We have given some instructions to follow. Look, use the destructured assignment. Basically, curly bracket thing. You use that and create a variable const and named functionality that extracts functionality property out of the. So we have been given a robot namka object that contains different properties. And functionality is also a basically property, but functionality is a object. Robot के अंदर it's a another object, right? So we need to use the const keyword and we need to type in functionality. This would be our, no, in the curly brackets we need to type it, right? Why inside the curly bracket? This is the destructured assignment techniques format or destructured assignment techniques template. All right. So we will assign it. We will assign it our object's name. What is our object's name? Robot. Inside the robot, just the robot, because we need to assign functionality as a key value inside our functionality variable, which is inside our robot object, right? We are not considering functionality right now as an object. We're just considering it as a thing, right? It as a property. Right now functionality has been considered as a property. So that is why we are not going deep in that. We are simply just writing robot. Running it, waiting it to save. Yes, we got saved. So now we'll type in console. Now, before moving forward, I'll let you know the functionality has been extracted out of this, right? So basically from here to here, it contains everything inside. All the functionality is intact. Nothing has been disturbed. Basically, if you simply type console.log functionality, this key, that is our functionality, and then type in beep, so you'll get an output that is beep up. Oh wait, we need not to write console again. Console inside console prints. Okay, we need to write simply this. So we get functionality is our variable, which is also a function. So in order to invoke that function, we need to simply type beep. That prints it out. So basically, distracted assignments basically extracts part of an object and save it as it is, right? So we have, yeah, this was all about it. I think, yeah, this ended. Hopefully it made sense. We'll catch you in the next video. Quickly, take care. We study built-in methods in, I think this will be last something, I guess, or do we? I don't think we have something else after this. Or maybe there is something after this, but whatever, we need to jump into project as soon as possible and we need to start our DSAs as fast as possible, right? So we'll look into that soon. Okay, take care.